Jai Hind aspirants, I hope you all are doing well. So here I am with the daily current affairs of 21st of October 2023. So let's see what's new today. So the first news for today is quite an interesting one, that is the cash for questions case. So recently, you know that CBI has been inquiring a parliamentarian from Trinamool Congress for her alleged इन्वॉल्वमेंट इन कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन। तो अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस। सो उनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने और लोकसभा एथिक्स कमेटी ने बुलाया फॉर क्वेश्चनिंग इन हर एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस। सो क्या होता है कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस के पास राइट होता है टू आस्क द क्वेश्चंस, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें एमपीज की, तो एमपीज को रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल नंबर 32 to 54 में रहकर क्वेश्चंस पूछना पड़ता है, एंड डायरेक्शंस 10 to 18 इट इज गिवन बाय द लोक सभा स्पीकर। So speaker gave this rule from rule number 10 to 18 and rule number 32 to 54 of rules of procedure and conduct of business, इसके तहत ही आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सारी जो प्रोसेस है वो इसी में है, और आपको क्वेश्चन पूछने के लिए 15 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। ठीक है, लेस देन 15 डेज नहीं होना चाहिए। और जो सबमिशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो मेंबर्स पोर्टल के थ्रू ही डाले जा सकते हैं। तो पार्लियामेंटेरियंस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं। जैसे आपका कोई कॉलेज अकाउंट होता है या आप कहीं काम कर रहे हो तो आपका जो कंपनी का अकाउंट होता है तो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, आईडी पासवर्ड, राइट। तो पार्लियामेंटेरियंस का भी एक मेंबर्स पोर्टल होता है जिसमें वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस में फिजिकल फॉर्म में भी या ऑनलाइन फॉर्म में जैसे चाहें वो वैसे क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अब कंडीशंस इसमें कुछ कुछ होती है कि वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड की, कोई आर्ग्यूमेंट या फिर कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा आप जो भी चीजें मतलब लाइक किसी को डिफेम करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि सेंसिटिव टॉपिक जो कि कोर्ट के कंसिडरेशन में है या फिर कोई ऐसी चीज जो नेशनल इंटेग्रिटी को हार्म कर सकती है, आप उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो सिग्निफिकेंस क्या है इससे, हर पार्लियामेंटेरियन की, चाहे वो कैबिनेट का मेंबर है चाहे कैबिनेट का मेंबर नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है और इससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है इन पब्लिक डोमेन एंड उस पर एक्शन होने की भी प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल डे पार्लियामेंट में कैसे होता है। तो पार्लियामेंट का जो दिन होता है वो 11 बजे शुरू होता है और 6 बजे खत्म हो जाता है। और 11 से 12 के बीच में 0 आवर स्पेशल मेंशन कॉलिंग अटेंशन होता है। ठीक है, फ्रॉम 12 to 1 p.m. question hour, in which 20 starred and 155 unstarred questions are asked. Then papers are tabled and bills are introduced during this time. Then there is a lunch hour of 1 p.m. to 2 p.m. उस बीच सब खाना वाना खाते हैं, ये सब होता है। और उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक लेजिस्लेटिव बिजनेस, 1.5 हाफ एन आवर का डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। लोकसभा चलती है 6 बजे तक, एंड ऑन फ्राइडेज at least 2.5 hours are reserved for private members business। अब प्राइवेट मेंबर से आपको लग रहा होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी का इंडिविजुअल आके पार्लियामेंट में डिस्कस करता है, राइट? नहीं। लक्ष्मीकांत दोबारा पढ़िए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट मेंबर्स। एंड मूविंग अहेड टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द पार्लियामेंट। सो पहली इसमें टर्म आती है स्टार्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें ओरल रिस्पॉन्सेस MP demand कर सकते हैं from the minister in charge, and these questions require the submission at least 15 days in advance with a maximum of 20 listed for oral answers each day। एक दिन में आप 20 से ज्यादा listed oral answers नहीं expect कर सकते हैं from any minister in charge। Unstarred question if you talk about, so these questions they receive written replies from the ministries and they are also required to be submitted 15 days ahead, and the daily limit for them is 2:30। Then short notice questions, so these are the questions which are pertaining to the urgent public concern। अचानक से पब्लिक में कोई कंसर्न आ गया, जैसे कोविड आ गया था अचानक से,
तो उससे रिलेटेड किसी भी मिनिस्ट्री की अगर प्रिपेयर्डनेस के बारे में आपको जानना है तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट नोटिस, एंड they are like they can be asked with a notice period of less than 10 days, accompanied by a valid reason, else they are being declared as null and void. Then questions to the private members. So मैंने private members के बारे में आपको पढ़ने बोला है. So first read it, then pause the video and read this particular box for this. All right. And if we talk about this particular news, this is extremely important for your prelims, where you can expect questions about the question hours and about the different parliamentary terms, and this is extremely important for your GS paper 2, and some elements of it you can like keep in mind for writing your answers in your GS paper 4, that is in ethics. Moving ahead to the Indo-Canadian relations and the relationship with the Vienna Convention. So अभी recently क्या हुआ है कि इंडिया ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला दिया है कनाडा से. तो उस पे यूएस के और कनाडा के हमारे मतलब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हायर लेवल के या फिर जितने भी मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उनके पास कॉल आ रहा है, एंड दे आर सेइंग दैट whatever the actions has been taken, they are violating the terms of Vienna Convention. While India has said that whatever we have done, it is as per the Article 11.1 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. So Vienna Convention on Diplomatic Relations क्या है? Vienna Convention एक तो आपको पता होगा prisoners of war और इन सब के लिए होता है. एक Vienna Convention है on Diplomatic Relation. It says that it is an international treaty which was established in 1961. एंड देखो 61 में हुआ था और 61 कंट्रीज ने ही साइन किया था उस टाइम पे. तो वेरी इजी टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट विच इंक्लूडेड इंडिया. एंड करेंटली इफ यू टॉक अबाउट राइट नाउ देयर आर 193 countries which are a part of it, including India as well. And it sets up a framework for diplomatic relation amongst the signatory nations. And if you talk about the Article 11.1, जिसके बारे में इंडिया ने बोला है कि our action was there at par with the like Article 11.1. So it deals with the size of international mission within other countries. जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी और कंट्री में जाके कोई डिप्लोमेटिक मिशन करना है और वो मिशन खत्म हो गया, तो उसके बाद इंडिया चाहे तो अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला सकता है, बट उसको कनाडा एंड यूएस अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं. तो ये कंट्रोवर्सी को एक जन्म दिया है इस पर्टिकुलर चीज में. अब हम बात करते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की और उसके कुछ की फीचर्स की. सो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फ्रॉम आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 36. ये कहता है कि डिप्लोमेट्स और उनकी जो फैमिलीज होती हैं दे आर ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ होस्ट कंट्री. मतलब कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ पे है और अगर हम लोग या हमारी पुलिस चाहे कि उस पर एक्शन कर ले तो नहीं होता, उनको इस तरह की इम्यूनिटी मिलती है. और इनको सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों में इस तरह की इम्यूनिटी मिलती है, एंड दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और स्यूड इन द होस्ट कंट्रीज कोर्ट्स. लीगली ऐसा होना चाहिए, बट कई बार इसका वायोलेशन हमें देखने को मिलता है. Inviolability of the diplomatic premises from Article 22 to 27. So ये कहता है कि जो एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स हैं उनके प्रेमाइसेस जो है वो इनवॉयलेबल है. मतलब उनमें आप बिना परमिशन के जो सेंडिंग स्टेट है, जैसे मान लीजिए यूएस एम्बेसी है, तो उसके प्रेमाइसेस पे दिल्ली पुलिस कभी भी ऐसे जाके सर्च नहीं कर सकती या फिर किसी को मतलब उठा नहीं सकती जैसे नॉर्मली हो जाता है ना. जैसे किसी फैक्ट्री या फिर किसी कंपनी के बारे में इनपुट मिला पुलिस को कि वहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही, मान लीजिए किसी डिप्लोमेटिक एजेंसी के यहाँ पे किसी एम्बेसी या कॉन्सुलेट के यहाँ से आपको इस तरह का इनपुट मिलता है तो आप डायरेक्टली वहां पे सर्च नहीं कर सकते. नॉन इंटरफेरेंस. Diplomatic agents are expected not to interfere in the internal affairs of the host country. It is a very important provision. Article 41 ये कहता है, but ऐसा कई बार आप देखते हैं कि ऐसा देखने को नहीं मिलता. Then protection of diplomatic missions. So the host country is responsible for ensuring the safety and protection of the diplomatic missions and their staff within their jurisdiction. Article 22 to 27. Once again, inviolability of diplomatic premises and protection of diplomatic missions, they both are covered under Article 22 to 27 of this convention.
Then terminating of diplomatic relation, Article 45 to 50. It says it tells you the procedures for termination of diplomatic relations between two countries, and how, like suppose a mission is completed, so how you are going to withdraw your men or your personals from that particular country. ये सारी चीजें आर्टिकल 45 to 50 में दी गई हैं अंडर दिस कन्वेंशन. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर टू. सो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, पर्टिकुलरली स्टेबल को. Moving ahead to the next thing, that is SGA, that is Siena Galaxy Atlas. So what is Siena Galaxy Atlas? जैसे आप नॉर्मली आपने देखा होगा ना, आप यूपीएससी की तैयारी करते टाइम भी ऑक्सफोर्ड का या ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस लेते हो, तो वैसे ही इफ यू टॉक अबाउट दिस एसजीए इज अ लाइक डिजिटल कलेक्शन ऑफ लाइक अप्रोक्सीमेटली 400,000 या 4 लाख गैलेक्सीज जो हमारी मिल्की वे के आसपास हैं, उनका एक कलेक्शन है. मिल्की वे इज द गैलेक्सी वेयर वी लिव इन एंड इट्स स्पैन इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लाइट ईयर्स. मतलब मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को भी 1 लाख वर्ष लग जाते हैं. तो इसी तरह से मिल्की वे की विसिनिटी में, मिल्की वे के आसपास जो 4 लाख गैलेक्सीज हैं, उनका एक डेटा इस एटलस में है. एटलस आपको क्या दिखाता है? आपको मैप्स दिखाता है कि आपके स्टेट के, आपके कंट्री के आसपास कंट्री कौन सी है. तो सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द सिएना गैलेक्सी एटलस, it tells you the galaxies which are there in the vicinity of our galaxy. And if you talk about this SGA, so this has taken the data from 3 surveys which has been conducted within the time period of 2014 to 2017. And these survey took place in 2 places, that is CTIO. CTIO की full form है Cerro Tololo Inter-American Observatory, and KPNO की फुल फॉर्म है किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी. सो इन दोनों चीजों को के डेटा को, ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके दिस एसजीए को कंपाइल किया गया है. एंड दिस इज बेसिकली लाइक ये जो सर्वे किए गए हैं, इनको बोला जाता है देसी लेगेसी सर्वे. एंड इन्हीं सर्वेस की बदौलत एसजीए एग्जिस्टेंस में आया था. अब इसका यूटिलिटी क्या है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, एंड लाइक इफ यू टॉक अबाउट द अदर एस्ट्रोनॉमिकल factors which can lead us to get a better understanding of our universe, like the evolution of a galaxy, like the spreading of dark matter during the evolution of the galaxy, how the gravitational waves are behaving when the galaxies are expanding. ये सारी चीजें हम इसके थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि इससे हमें यूनिवर्स के पैटर्न्स और जो सेलेस्टियल फिनोमेना हैं उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, डार्क मैटर के बारे में हम जान सकते हैं, और ग्रेविटेशनल वेव्स की भी स्टडी कर सकते हैं थ्रू दिस. एंड दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर योर जीएस पेपर 3 एंड फॉर योर प्रीलिम्स. Moving ahead to a very positive news which came right now, that is Operation Nanhe Faristey. So the Railway Protection Force has launched this operation, and here you can see that this question has been asked in the like कौन बनेगा करोड़पति. So which organization has launched the Nanhe Faristey? Sorry, it's not Parinde, it's Faristey. Okay, so Nanhe Faristey. So the correct answer to this is Indian Railways. So the Indian Railways, it has started the operation that is Nanhe Faristey. Now it is involving the Railway Protection Force also, which is the only force which is under the Ministry of Railways as of now, in reuniting the lost or separated children with their family. तो चिल्ड्रन जो कई बार रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, जैसे अभी तो नहीं दिखाते उतना मूवीज में, लेकिन पुरानी मूवीज आप देखो तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक बच्चा बिछड़ जाता है, उसके बाद 25-30 साल बाद मिलता है. ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती रहती थी. तो वो सारी चीजें ना हो, कोई अमिताभ बच्चन और शशि कपूर बिछड़ ना जाए आज के दौर पे, तो उसके लिए ऑपरेशन नन्हे परिंदे, तो नन्हे फरिश्ते, नॉट परिंदे, फरिश्ते. ओके, वो मेरे को बार बार ये सुन के फरिश्ते की जगह परिंदे याद आ रहा था. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते. ऑलराइट,
The children who are in the need of care and protection, uh, which are encountered on the premises of the Indian Railways, तो उसको आरपीएफ केटर कर रही है. तो अब आरपीएफ क्या होती है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. आपने कई बार देखा होगा और मैंने कई लोगों को नेग्लिजेंस में देखा है, वो आरपीएफ को रेलवे पुलिस फोर्स बोलते हैं. नहीं, इसकी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्सेस ऑफ अवर कंट्री. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1882 क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे सबसे बड़ा एसेट हुआ करता था रेलवे, और रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए दे हैव टेकन अप अ यूनिट कॉल्ड एज वॉच एंड वार्ड्स. आजादी के बाद आरपीएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस और आरपीएफ को स्टैट्यूटरी फोर्स बनाया गया 1957 में, एंड इट बिकेम एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1985. अगर आप सिविल सर्विसेज क्लियर करते हो और आपकी रैंक थोड़ी पीछे आती है तो एक सर्विस आती है IRPFS, ठीक है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज. तो आप उसके ऑफिसर बन के आरपीएफ को अपनी सर्विसेज दे सकते हो. इट इज लेड बाय अ डायरेक्टर जनरल विच इज लाइक a DG rank officer from the Indian Police Services, and उसके अलावा जितने भी ऑफिसर कैडर इनका, that is filled by the IRPFS. Their duties includes the protection of railway property, passenger areas, ensuring the safety of the passengers. Additionally, इसके अलावा इनका जो काम होता है, that is escorting the passenger trains and access control at the railway stations since 2003. तो आपने देखा होगा, आप जब कभी ट्रेन का सफर करते हैं तो आपके उधर जो पुलिस जाती है तो वो मोस्टली आरपीएफ होती है या रेस्पेक्टिव स्टेट पुलिस जो आरपीएफ की सहायता के लिए होते हैं, उसको हम कहते हैं जीआरपी, वो भी रहती है. तो स्टेट पुलिस वाले अगर रेलवे सिक्योरिटी में लगे तो दैट इज जीआरपी, दैट इज नॉट आरपीएफ. आरपीएफ इज द ओनली, यू कैन से, वन ऑफ द फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. आर्म फोर्स एक ऐसी है जिसके पास पावर है अरेस्ट करने की. तो दिस वाज अबाउट आरपीएफ. एंड आरपीएफ का एक विंग और है जिसको हम आरपीएसएफ बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स. तो क्या हुआ था 1962 वॉर में, आरपीएफ के भी कुछ पर्सनल्स ने कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, तो उसके बेसिस पे आरपीएसएफ है. और आरपीएफ की अभी हाल फिलहाल में पिछले 5-6 सालों में एक कमांडो यूनिट भी बनाई गई थी. यू हैव टू टेल दैट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द कमांडो यूनिट ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. ऑलराइट. And the roles and responsibilities of RPF in this particular mission in Nanhe Faristey. So RPF, if you talk about like Nanhe Faristey and other thing, like they have conducted multiple, you can say, initiatives in the terms of women's safety, in the terms of passenger security. तो रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर्स और स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए जो करना है वो आरपीएफ करती है. एज एन आर्म्ड फोर्स इनकी क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स, ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी एसेट्स. क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि जब भी किसी की कोई डिमांड होती है वो सबसे पहले जाके या तो रेल लाइनों में धरना लगा देते हैं या पटरियां उखाड़ देते हैं. तो उस पर्टिकुलर केस में आरपीएफ का रोल कम्स इनटू प्ले. एज सिंपल एज दैट. So this news is extremely important for your prelims. जैसे केबीसी टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए for your prelims only, not more than that. So now it's the time to test ourselves through previous year's questions. So let's see how many of you can solve all the questions correctly for today. So the first question is going to ask you from 2016 prelims. Satya Sodhak Samaj organized a movement for upliftment of tribals in Bihar, a temple entry movement in Gujarat, an anti-caste movement in Maharashtra, a peasant movement in Punjab. Pause the video, think about it. And yes, you are correct. The correct answer to this is C. It is an anti-caste movement in Maharashtra. It was led by whom? जिन्होंने इसको लेड किया था उनकी वाइफ के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है. तो सोचिएगा, सोच समझ के, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही they were a pioneer in multiple social reform movements. Moving ahead to the next question, which is going to ask you that which was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907? Very easy question. Pause the video, try to answer it. And yes, you are absolutely correct, because the extremists lack in faith of the capacity of the moderates to negotiate with the British government. As simple as that. कुछ tough नहीं था, बहुत easy question था. Moving ahead to the next question, which is going to ask you that the Chelmsford Montesquieu reform, or you can say the Montfort reform, or the proposals were related to, again, 2016 prelims, social reforms, educational reforms, reforms in the police administration, or constitutional reforms. So pause the video, try to answer it.
And yes, you are absolutely correct. They were the constitutional reforms. So that's all from my side, students. I hope that you all enjoyed the video, found it informative, and learned something new. So at the end, as usual, I just want to say that study hard, practice art, and have a wonderful day, guys. Stay healthy, stay awesome, because you all are awesome. So bye bye, take care, and see you soon.